समितियों में भाग लेने का अवसर मिलेंगे, जहां बजट मांगों पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अन्य गैर सरकारी विशेषज्ञों से जानकारी हासिल कर सकेंगे। आधिकारिक दस्तावेज मिलेंगे, आप उन्हें अवश्य पढ़ें और समिति की हर बैठक में सक्रिय भाग लें। आप बजट दस्तावेजों की जानकारी करें, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें, जब मैं नए सांसद के रूप में आया तो मैंने पढ़ना और सीखना शुरू किया कि बहुत सारे टर्म्स उसके बड़े अपरिचित होते हैं। इसलिए उस टर्मिनोलॉजी को, बजट को अगर अच्छी तरह आप समझेंगे तो आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। इसी तरह समितियों की रिपोर्ट बहुत ही वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है, जिसका संदर्भ आप सदन की बहसों में और प्रश्नों में कर सकते हैं। हाल के वर्षों में पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का महत्व दुनिया में बढ़ा है। अब दुनिया इट्स अ ग्लोबल विलेज। आप देखते हैं एक जगह कोई मामूली समस्या होती है, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। भारतीय संसद विश्व स्तर पर अनेक संसदीय संगठनों जैसे IPU, CPA, P20 आदि की सक्रिय सदस्य है। इसके अलावा मित्र देशों के साथ संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का बाइलेटरल आदान प्रदान भी होता है। आप में से सभी लोगों को कभी न कभी अवसर मिलेगा कि आप बाहर में भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करें। हमारा संसदीय ज्ञान, आचरण, दुनिया के बारे में, बदलती स्थिति के बारे में हमारी जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि हम जाकर भारत के संसद का नाम और आगे बढ़ा सकें। संसद की कार्यप्रणाली को जानने के लिए आपको रूल्स, प्रोसीजर, कन्वेंशंस और प्रेसिडेंट जानना ही जरूरी नहीं है, साथ ही यह भी जरूरी है कि रूल्स के पीछे क्या डायनेमिक्स ऑपरेट करता है वह भी हम जानें, जो 2 दिनों में आपको यहाँ चर्चा में सामने चीज़ें आएंगी। क्या क्वेश्चन और का इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊं। अकाउंटेबिलिटी किस तरह इंश्योर करता है। 1957 में डॉक्टर राम सुभग सिंह, आप पुरानी चीजों को पढ़े तो पहले देश के मान्य विपक्ष के नेता हुए थे। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा और उससे मुधड़ा कांड हुआ, जिसको आगे बढ़ाया फिरोज गांधी ने, और उस वक्त के जो इस विभाग के मंत्री थे कृष्णाचार्य, उनको इस्तीफा देना पड़ा। एक क्वेश्चन से मैं आपको अनेक प्रेसिडेंट गिना सकता हूं, पर सदन न चलने का मुल्क पर कितना नुकसान होता है यह आभास हमें होना चाहिए। देश की आजादी के जब 50 वर्ष हुए तो 97 में संसद ने सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन पारित किया कि क्वेश्चन आवर को या मेंबर्स आवर को, 0 आवर को हम कभी भी सस्पेंड नहीं करेंगे, वेल में नहीं जाएंगे। लेकिन यदि देश, संसद अपना रिजोल्यूशन पास करके उस पर कायम न रहे तो हम लोगों को कैसे आश्वस्त कर सकते हैं। अगर संसद अपनी बातों पर कायम न रहे तो क्या हम देश से अपेक्षा कर सकते हैं। ये हमारे लिए आत्मविश्लेषण का विषय है। जब मैं पहली बार सांसद बन के आया तो आदरणीय प्रणव बाबू, उनसे मैं मिला, ग्रेट स्कॉलर। उन्होंने एक बात मुझे कही कि जब वो संसद में आए तो MC छागला साहब ने उनको कहा था कि हमेशा सुबह से शाम आप बैठे रहो, अपने आप चीजों को आप समझेंगे। और मैं कह सकता हूं कि देश के कुछ बेस्ट पार्लियामेंट्रियंस जो उनमें प्रणव बाबू थे। तो आपसे भी आग्रह होगा कि हम सुबह से शाम तक बैठें और बारीकियों से हर एक डिबेट को सुने, अलग के मत को भी सुने, तभी आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख सकते हैं। और ट्रेनिंग का क्या महत्व है, मैं 2 लाइन में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। एक बार जब मैं पत्रकार था तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के साथ मुझे चीन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया। वहाँ आज के उनके जो राष्ट्रपति थे तब वहाँ के इंचार्ज हुआ करते थे। यानी देश 5 वर्षों बाद दुनिया कैसे बदल रही, हमारा नेतृत्व कैसे होना चाहिए, 10 वर्ष बाद क्या होना चाहिए, जनसंख्या कितनी होगी, अर्बनाइजेशन कितना होगा, टेक्नोलॉजी कैसे होगी, उसके अनुसार हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर टेक्नोलॉजी यानी पंचायत स्तर से ऊपर तक ये ट्रेनिंग का महत्व है। मैंने तो आज आग्रह किया अपने ऑनरेबल चेयरमैन से कि हमें भी हर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष पर क्या ऐसी चीज हम इवॉल्व कर सकते हैं कि बदलती दुनिया में हम कैसे और सक्षमता से अपने संसद में बातें रख सके। इसके लिए कुछ इस तरह की चीज हो सके लगातार। तो हम देखें पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में कहूँ कि सदन को जिस तरह बदलते मैंने देखा है। पहले क्वेश्चन आवर, स्पेशल मेंशंस हमें लिख करके सबमिट करने पड़ते थे, अपने टिकट फॉर्म के साथ सबमिट करने पड़ते थे। पार्लियामेंट्री पेपर्स के बंडल आते थे, महीने में इतने पेपर्स आते थे कि कमरे में रखना मुश्किल होता था। 2026 में पेपरलेस संसद और सचिवालय। मैं अपनी बात खत्म करूं इसके पहले आपको 10 बड़े चेंज बहुत ब्रीफली नैरेट करूंगा। पहला, आज हर नोटिस इज नाउ डिजिटल। पहले सब कुछ सर्व किया जाता था, आदमी घर घर हर सांसद के यहाँ जाता था। संसद सेतु और मेंबर्स पोर्टल, इसको कभी जाकर देखिए कितना इसका महत्व है। ई फाइल एंड द डिजिटाइजेशन ऑफ आवर रिकॉर्ड्स।
आप कल्पना कर सकते हैं राज्यसभा ने 40 लाख डॉक्यूमेंट्स कैसे डिजिटाइज किया, कितनी बड़ी चीज अपनी यहां हुई। हम इसको इस्तेमाल करें। जब हम लोग आते थे किसी विषय पर, हम तैयारी करके बोलना चाहते थे, हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, अपने से किताबें ढूंढनी पड़ती थी, देश के एक्सपर्ट्स को ढूंढना पड़ता था कि हमें ब्रीफ करिए, बताइए। आज आपको क्लिक पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो कितनी सुविधा है आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, ये आप गौर करें। Our one parliament, one portal, more than a dozen separate websites and addresses have been brought together into a single unified portal, Sansad In. For a member, this is the convenience of a single window, one door to every service, every document and every proceeding in the house. पांचवा, our language give their dues. जब हम सब आए तो बहुत कम लैंग्वेज में था, आज 22 लैंग्वेज में अनुवाद उपलब्ध होता है। उससे बड़ी क्रांतिकारी चीज हुई है। अभी शायद 9 लैंग्वेज में एआई से आपको, यानी आप तमिल में बोले, हम हिंदी में सीखे। आप उस दिन की कल्पना करिए कि आप असमी में बोले और कोई आदमी तमिल में तमिल भाषा में सीखे। मुझे याद है, मैं जब विद्यार्थी था तो पढ़ने जानने की थोड़ी रुचि थी देश के बारे में, तो 60s में किताब आई, दुनिया में वो चर्चित हुई। दुनिया के जाने माने अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा, शायद सेलिस हैरिसमैन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड एहेड। यानी लैंग्वेज राइट्स हुए थे कि लैंग्वेज के आधार पर यह देश खतरे में है। ये उनकी किताब का मर्म था। 10-20 वर्षों तक उस पर चर्चा चलती रही। आज इस एक चीज ने लैंग्वेज की सारी चीजों को खत्म कर दिया। आप अपनी भाषा में बोले, हम अपनी भाषा में सुने, और वो प्लेटफॉर्म आज राज्यसभा 9 इस तरह की भाषाओं एआई पर ये चीजें उपलब्ध हैं। सुनिए, ये कितनी क्रांतिकारी चीज है। इसी तरह वाणी सेतु, द डिजिटल वीडियो रिपोजिटरी, ये भी बहुत बड़ी संख्या में पुरानी चीजें हैं। पेपरलेस कमिटी मीटिंग्स, पेपरलेस प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस। पहले हमें अटेंडेंस साइन करना पड़ता था। ये 10 मेजर चेंजेस मैं आपको बहुत ब्रीफली बताया। अब मैं अंत में आप सबको धन्यवाद दूंगा। और आदरणीय सभापति जी, आप राज्यसभा के हम सबके मार्गदर्शक हैं। सदन की कार्यवाही को बहुत ही गरिमा से सभी लोगों के साथ सद्भाव धैर्य के साथ आप संचालित करते हैं। हमारा विश्वास है आपका की नोट एड्रेस हम सब के लिए बड़ा इंस्पायरिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। आपके स्वागत उद्बोधन ने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उद्देश्य, उसकी सार्थकता और एक सांसद के संवैधानिक दायित्वों को अत्यंत प्रेरक ढंग से हमारे सामने रखा है। निश्चय ही जो आपके विचार हैं वो आने वाले सभी सत्रों के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेंगे। वाणी सेतु से लेकर सदस्य सेतु तक माननीय उपसभापति महोदय ने जो संपूर्ण डिजिटल संसद है उसका सजीव चित्र एक तरह से हमारे सामने रखने की कोशिश की है कुछ ही पलों के अंदर, और वो इन 2 दिनों के हर सत्र की दिशा भी कहीं ना कहीं तय करेगा। माननीय सदस्यों, राज्यसभा को अक्सर हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। एक ऐसा सदन जहां अनुभव, विमर्श और दूरदृष्टि मिलकर राष्ट्र हित में नीति और कानूनों को नई दिशा देते हैं। आज के इस उद्घाटन सत्र में हमें उस संवैधानिक दृष्टि को और व्यापक परिप्रेक्ष्य में सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो न केवल संसदीय दायित्वों का मार्गदर्शन करेगा, बल्कि जो भविष्य की संसद है, संपूर्ण डिजिटल संसद की दिशा भी कहीं ना कहीं निर्धारित करेगा। It is my honor and proud privilege to invite the Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to deliver the inaugural address. Sir. मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। On the occasion of the inauguration of this orientation program, Prarambh for the newly elected members of the Rajya Sabha in the biennial elections of 2026, the dignitaries sharing the dais with me, our Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Sriman Harivansh ji, Honorable Members of the Parliament of Rajya Sabha, Secretary General Rajya Sabha, Sri P.C. Mothi ji and his team, officials from
राज्य सभा सेक्रेटरिएट, भाई बहनों सबको नमस्कार. I once again extend my heartiest congratulations to each one of you who got elected first time for the Rajya Sabha. In Rajya Sabha, we should understand only one thing. When we are entering into the Rajya Sabha or Lok Sabha, we should feel very proud that we are entering into the soul of Indian democracy. These two institutions, Lok Sabha and Rajya Sabha, are deciding the fate of this nation, in which direction the country should move. You are a part of it. That responsibility and the duty conscience should be always with you. That is what everybody expects. That I was informed that 67 of you have entered this August House for the first time. That I was informed. I got this information from the Secretariat. It is an evolution. We are in public life for a long time. So this is one of the wonderful journey that we have entered into this August House. I am aware that the orientation program is being held on Saturday and Sunday, when many of you would like to go back to your states to discharge the public commitments. We do understand that. But we are always like to have the orientation program when the session is in progress. So you have to sacrifice at least one weekend here just to improve your knowledge, to just improve your knowledge about how these rules have been framed, for what purpose this has been framed, how to utilize the available tools so that you can raise your voice in the Rajya Sabha. I am always insisting that we should not disturb 0 hour and the question hour. Because we all know, which the outsiders may not be knowing. They will always find why you have not spoken, somebody has spoken, but you have not spoken. The outsiders always think that anybody can speak at any point of time. That is not possible within the house. So I am always insisting that the 0 hour and the question hour should never get disturbed. So the individual members' right to speak, the chance to speak, that will get well established. Special mentions, yes. These are the 3 tools that is available to every member to speak, if not on that day, at least the next day. And we are also, me and our Deputy Chairman always discuss how to give opportunity to all the members, from the northeast to the south, from Gujarat to east, Orissa. We are always covering how the house should get echoed with the sentiments of every state. That is the idea under which we are functioning. And attending this program will help you definitely to continue a long tradition of strengthening democratic institutions and discharge constitutional responsibilities effectively. Some among you are senior leaders of your party. Some are one-member party. Previously, one-member party will get only 1 minute to speak. By the time you stand and say Adhyaksh Mahoday, then 25 seconds gone. So we decided that at least we should give 3 minutes even to the one-member party. The reason is the public doesn't know
that the time has been allocated on the strength of the party for participating in the debates and discussions. Yes, BJP, yes, the ruling party, and they got more numbers, they get more time. The second chance goes to the main opposition party, Congress. And the time is getting divided, depends upon the party strength. And party has to keep their rotation. So the chance for each individual member to speak on every subject is highly limited. But still, we are sometimes extending the working hours so that we try to accommodate as many members as possible. And you all know that Lok Sabha and Rajya Sabha, Lok Sabha is having its own importance. At the same time, Rajya Sabha is also having its own importance. Rajya Sabha members, mostly those who are in politics, there are two parikramas always. One is Ganesh parikrama, the other one is Kartik parikrama. So in Rajya Sabha, you can enter through the party. So you need to take care of your Ganesh parikrama more. That should not isolate you for doing the Kartik parikrama. You have to understand one thing, that Lok Sabha, they are directly getting elected by the people, and you are getting elected by the people's representatives. That means we are got elected through the elected people's election. There is a clear advantage, there is a disadvantage also. One advantage is that you need not meet too many voters, but you can easily allocate your time how to do on the positive, constructive things more. That much ample time you are having. One disadvantage is that you are little away from the public. That you should not worry about. You should always keep yourself, first to do the Ganesh parikrama, then you should do your Kartik parikrama also. You should call many associations. You can call them for a cup of tea, and you can go and attend theirs, and through them you can be meeting so many small vendors also. You are having the equal amount to be spent, like our Lok Sabha members. Lok Sabha member has to spend everywhere in his constituency, because they got more compulsion. I have voted for you, you have not taken care of my village. So everybody will be demanding so many things. But here, you got a little liberty to spend your MP Large Fund. You can tour, you can meet, if it is very necessary, then you can allocate the money. If you do this of touring and allocating your money, you will be very close to the public all the time. So, when we are in public life, you should never get away from the public. Though we are not elected directly by the public, we should be always with the public. That is one way the importance of you will be felt by the public. We should never isolate ourselves from the masses. You should tour. You, small or big, you should always participate in some functions. Then that will be felt. And none of us
should forget one thing, that this is one of the rarest chance that we got an opportunity to get elected into the Rajya Sabha. This is giving you to serve the people for 6 continuous years. Except you are not elected on the by-elections of the state, Rajya Sabha, that you are continuously serving the nation for 6 continuous years. So we can, you got a lot of time to learn. You can allocate your time more for studying the new things, improve your knowledge. At the same time, you got the liberty to plan your meeting of the public, which Lok Sabha members are not having. Everybody will be pouring in them. They have to meet. This is the clear advantage what you are having. And you got the right to represent the whole of your state. That is another advantage you are having. You can spend your MP Lards fund anywhere in your state. So you can tour the entire state. You can meet the people. Where the neglected people, they are badly in need of your funds, can be utilized there. That will become a historical mark that will be there in the minds of the people forever. So this is how we have to improve the public service to the people. And as it is mentioned that we are trying to improve the functioning of Rajya Sabha by way of translation of languages. Now, when we have introduced this system through AI automatic translation, then immediately some of our Telugu speaking MPs told to me, sir, Telugu is not included. I told them this is only, we are doing the testing. It is now in the project as a testing method. Soon it will be extended to all the 22 scheduled languages. But your suggestion how to improve that is always welcome. Whenever Putin ji is coming, I met him, I talked to him. He is not using one single English word. He is talking only in his Russian language that is getting translated. What is the problem? But in India, we always feel if you don't speak in English, your flow is very spontaneous. If your flow is not good, then you are not an intelligent. English is only a language. By knowing that language, you will become intelligent. By not knowing any other language in the world, are you not an intelligent? Intelligence is one that depends upon our personal capacity to understand the things and to deliver the things. In which language you are delivering, that is irrelevant. And another one thing I want to say, our mother tongue is very important for all of us. No doubt about it. That should not make us to hate the other languages. Bharati, the Tamil national poet Subramania Bharati is telling, 30 கோடி முகமுடையால் உயிர் மொயம்புற ஒன்றுடையால் இவள் செப்புமொழி 18 எனிர் சிந்தனை ஒன்றுடையால். He is telling, at that time population was 30 crores, so he said Bharat Mata is having 30 crore faces. But at the same time he is telling she is won by the soul. And he is telling that Bharat Mata speaks 18 different languages. That time it was 18, now it is more. In the future it may be little more. So we should not find fault. What was existing at that time when he was at his peak and when he was
at his peak of the public life, he said 18 languages. But he is telling, those he speaks 18 different languages, her thinking is always one. So we always should do it like that. Yes, I like my mother. That doesn't mean I have to hate the mothers of others. Like that, I like my mother tongue. I am very proud of my mother tongue. That doesn't mean other languages are inferior to my mother tongue. That is not correct. See, in the caste also, we have no right to treat someone as untouchables. There cannot be a bigger crime than that. We all are one. How that has come, however it has come, that has to be wiped out. We should not worry about that. If we cannot be against untouchability, then we are not at all human beings. How we can treat one person as untouchable because he is born in a particular caste? That is inhuman. So, my thinking is always that we should take the entire society as one. At the same time, I am always telling, we have to be generous. We have to be generous. At the same time, we have to be strict also. Strict and generous is not contradicting each other. It is complementing each other. We should understand if somebody is deviating from the prescribed norms, okay, here and there, then that has to be corrected. When they try to deviate too much, then strictness should come and apply on them. You can find in the Rajya Sabha also, myself and Deputy Chairman always want the opposition to speak more. If you take, we are given, to be very frank, I think in every session, we give more time to the opposition than the ruling side. Sometimes ruling side people also come and say, sir, you are giving more time to them, but you are not giving to us. In democracy, ruling party is very, very important because they are leading the government. Equal importance is the opposition because that is where the democracy survives. That is where the democracy grows. That is where the democracy gets saved. So we are always doing that. But my humble request to everyone, there are so many platforms outside the parliament also to take up our political agenda. We should always take the national agenda inside the parliament. I always say in the house, debates, discussions and even disruptions, it must be always lead to a final decision. Without decision, no country can move forward. Without decision, no government can function. So decision is required and the right decision is required and the right decision is more required at the right time. If you delay also, the right decision also becomes sometimes wrong decision or that becomes no decision. This is where we need to have knowledge of the rules and procedures of the House towards contributing effectively through debates. Likewise, before submitting a notice under Rule 267, you have to understand the rule fully. Every day nowadays I am getting sometimes 16, sometimes 24, sometimes 26. I have given the ruling, it is not my ruling.
the rules regarding 267 has been not framed by me. It is framed by our predecessors, that Krishna Gandhi, when he was the vice president and the chairman of the Rajya Sabha, who all are there in that team. Vajpayee ji was there, Nariman was there, Manmohan Singh ji was there, Pranab Mukherjee was there. So all the stalwarts from that rules and norms for 267. So don't get annoyed either with me or our deputy chairman that we are not allowing 267. This should be used as the rarest of the rare weapon. When the situation arises, the rarest of the rare, then we have to take the consensus of the House to take up something under 267, and the whole House consent to it, then we will be taking it up. And I have also mentioned that between 1988 to 2000, Rule 267 has been invoked only thrice. Since 2000, with the implementation of the recommendations of the Rules Committee, there has been no suspense of proceedings under this rule. On the 8 occasions, the discussion on the subject matter raised in the notice under Rule 267 took place only after the consensus of the House. We should not get confused with the Lok Sabha procedure and the Rajya Sabha procedure. There are mostly same, there are differences also. What the Rajya Sabha says will apply to the Rajya Sabha, what the Lok Sabha says, it will apply to the Lok Sabha. Healthy debate always strengthens democracy. Constructive cooperation always makes the country forward. The orientation program is designed exactly to achieve this goal. You have every right to disagree. You have to disagree in that sense to make the decision more retuned, more refined, so that final decision will be more useful for the public and the nation. Every policy you frame, every question you ask, every law you enact, and every discussion you participate in this potential, it has the potential to improve the countless lives. What the decision we are making here in Rajya Sabha, that is going to determine the fate of the nation. Friends, every generation receives an opportunity to save the history. Ours is a generation that will contribute to the vision of Viksit Bharat by 2047, set by our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji. 2047, another 21 years is there. I don't know whether I will be there or not. But our country should enjoy it. Our young generation should enjoy it. They should feel proud that India is the #1 nation in the world. That should be, for that only we want to create the foundation stone in all these years where we are working for the nation. It cannot be built overnight. That everybody knows. All our efforts should be moving towards that goal so that India becomes the superpower. I always say why India should become the superpower. That is, not to dictate terms to other countries, but no other country should dictate unnecessary terms to India. That is where world democracy survives. Unless we are powerful, we will be taken for granted. That is not good only for India, but that is not good for the humanity. Because we always care for the humanity as a whole. That is the culture of this nation. Time is a challenging factor for both in the House, for you
as well as the chair, whoever is in the chair. It will be greatly helpful if you are aware of these rules and procedures of the conduct of the business, so that the house can transact business in the most effective way and in the most efficient way. I would like to touch upon another important aspect. As I mentioned already, that is the sanctity of the question hour and the zero hour. I am always appealing to all the leaders of all parties that we should not miss that. I think it will improve from Monday. That is because we have to live with optimism all the time. I am using this as a platform to urge all the members to keep this in mind, to cooperate with the chair for the smooth transactions of the business. Every day, every hour, every minute, every second of our time in the house should be used to strengthen the democracy, and we should do everything in building the nation with a positive note. Friends, as I mentioned, learning is a continuous process. Nobody knows everything. There is a proverb in Tamil that always tells, "Kattrathu kaiman alavu, kalladadu ulaga alavu." Whatever you might have educated, what you have known is only handful. What you don't know is the rest of the world. This is what it is said in Tamil that apply to all of us all the time. We should always try to educate ourselves, to groom ourselves, to make ourselves more sharp, more efficient, and above all, more accommodative. Because we learn more, because we know more, we should not treat others as inferiors. We should always take everyone with us. That is where the success story of every person who is in the public life. Your intervention can change a policy and transform generations, but it should be right intervention. And the point of order, most of the point of orders are getting negative because it has been raised by the members for the sake of they want to say something. You should try to understand the point of order, and at the right point of order, nobody, whoever is sitting in the chair, should have any chance to deny it. So you go through the norms, and the right time, never hesitate to raise your hand. From even a small suggestion, either in the committee or in the Rajya Sabha, that can create the new history. When I was never a minister, but I was the continuously, when I was in the Lok Sabha, I was the continuously the subcommittee chairman of textiles, because textiles is coming under our commerce committee. From that time onwards, we are fighting that textiles should have a separate parliamentary committee, because that is giving the maximum number of job opportunities for the illiterate, uneducated, especially women. That is there always, but under that subcommittee, we have toured the entire country, because handicrafts also coming under that. When while touring, we understand the textile sector has not been modernized. Unless the textile sector get modernized, there is no survival for textile sector. That's why the tough scheme. Technical upgradation scheme get introduced because of the recommendations of my committee, textile committee, on when Vajpayee ji was in power. Why I am telling this?
That makes the big change in the textile sector today. India is one of the leading exporter of textiles even today. Of course, these FTAs which are the present government under Modi ji and Piyush Goyal ji are trying to sign, this UK, Europe, it is going to bring more and more business. That the level playing competition with the Bangladesh and other African countries, of course with Pakistan also, there is no import duty. If once FTA is signed, there will be no import duty for our textile goods with the European Union. Already with UK it has been signed and it will come into force. Soon it is going to come into force for the entire Europe. So why I am telling all these things? So when we are doing a job very sincerely, that makes the difference. On that day you may feel, what is the use of doing so many things? Nothing is coming up. Politics is one. It is like the job of the advocate. You should always remember it. When you, after completing your law degree, you are joining under a very famous senior lawyer. You are almost like a staff of that law office. But you should work more and more and more. You learn more and more. When the clients coming, you should start attending them. Then they will feel, oh, our lawyer is good. The senior also feel, oh, this man is doing some work. So you do lot of work, you are not getting anything. Sometimes not even the appreciation from the senior lawyer. Remuneration is different. You will not get any remuneration, I know. You have to take some money from your parents and go to the office. But the days will be slowly changing. Then you will start earning something, still you are putting a lot of hard work. When you become the senior, then you are not doing that many job, but money is coming to you and you are distributing to your juniors. Like that, public life is always like that. You have to do a lot of service. Your service will get recognized sometimes after a decade, sometimes after 2 decades, sometimes after 3 decades. But you never stop doing service to the people. That is my humble request to all of you. And the IAE is making wonderful changes. When I come to know that it is not only translating the speeches in Hindi and English to the regional languages, it is translating the speeches of the regional languages into all these 8 what we have adopted. We are going to adopt all the 22. So every one of you is free to speak in your mother tongue freely. Never feel, I don't know much English. English is only a language. That cannot determine your efficiency, that cannot determine your knowledge, that cannot determine your greatness. Never worried about that. And many of us, those who are in public life in India, most of us are got educated only in a government school where we are being taught only in the mother tongue medium. So we need not worry about. We should not be worried about. That is a colonial mindset. We should come out of it. With these words, I once again wish you all that whatever your contribution in the positive way, that will make a new history. And I want you all to be the part of the new history. With these words, I wish you all every success, and I thank my colleagues in the Rajya Sabha Secretariat, the Secretary General, Deputy Chairman, everyone for organizing this wonderful function. Not only this orientation, anytime you got any doubt about the rules and regulations, our Secretary General is always available to you. You can approach to them, you can talk to him,
you can take the clarifications. If you don't understand, you can write about your doubts. That will be replied by him. So I wish you all every success in your new endeavors. Thank you so much. Thank you very much, Honorable. Thank you very much, Honorable Chairman, sir. Thank you very much, Honorable Chairman, sir, for your inspiring and visionary address. Your words have beautifully underlined the constitutional responsibilities of members and the larger vision of a parliament that is rooted in democratic values while embracing the possibilities of the digital future. Thank you so much. अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ राज्यसभा के माननीय महासचिव श्री पीसी मोदी जी को कि वो वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद ज्ञापन पेश करें. Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Honorable Members of Rajya Sabha, Officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat, members of media, ladies and gentlemen, Namaskar and a very good morning to you. My heartfelt gratitude to the Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha for gracing this occasion and inaugurating this orientation program for the new members. Sir, this program could not have been designed and organized without your able leadership and guidance. Your keynote address on the vision and responsibilities of members has set the definitive tone for these 2 days. Sir, your reflections have provided the members immense clarity on how to approach their parliamentary duties. You showed them the vision of a dignified and collaborative House of Elders. In that vision, lawmakers rise above party lines. They put the nation first. They voice the aspirations of their states with power and pride. They stay well informed and research driven. They use digital tools with ease to meet the challenges of governance today and tomorrow. And every debate, every discussion, every law serves the welfare of our citizens. Sir, you have clearly laid out the foundational values of this august House and the constitutional obligations of its lawmakers. Your inspiring counsel will surely guide them towards a meaningful and constructive contribution to the Council of States. I am also thankful to the Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha for his enlightening welcome address. Sir, you described the wide canvas within which the honorable members operate. You set an example of high standards of conduct and dedication. Your seasoned guidance and deep academic wisdom will surely inspire our new members. They will approach their legislative duties with heightened sense of responsibility and parliamentary decorum. I express my sincere thanks to our distinguished panel of speakers for agreeing to address our new members. Over these 2 days, they will share their rich insights on wide range of topics of parliamentary practice and procedure. Their guidance will introduce our members to the finer nuances of the functioning of the House of Elders. We are grateful for their time and their wisdom. To our newly elected and nominated honorable members, my heartiest congratulations to each one of you. You are the very core of this initiative. A vibrant democracy thrives on fresh perspectives, and your entry brings new energy and enthusiasm to our democratic polity. This program is designed to simplify complex legislative procedures for you. It passes on the institutional memory. It familiarizes you with the rules, practices, and conventions of the House. It also acquaints you with the amenities due to you as members of the upper house of Parliament. We deeply value your proactive spirit and your readiness to learn in your new role and responsibility. I express my heartfelt gratitude to members for their overwhelming presence this morning. Without your active cooperation and participation, this orientation program cannot succeed. I also commend the officers and staff of Rajya Sabha Secretariat for their painstaking efforts in organizing this program. I also thank
our allied agencies for their logistic support, like the National Informatics Center, the ITDC, and the CPWD. I'm thankful to our friends from the print and electronic media who have come here to cover this program. Before I conclude, I just want to assure from the side of the Secretariat that we are committed to provide absolutely efficient and effective service to all our honorable members. Now I request all of you to join us for a group photograph. Tea will follow in the banquet hall. We will gather again in this hall at 11:30 in the morning. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही उद्घाटन सत्र के पहले चरण का समापन हो रहा है। आइए हम सभी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान में सम्मिलित हों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। May I now request all the honorable members to kindly proceed for the official group photograph with the honorable chairman and the honorable deputy chairman. This photograph will माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, संसद का प्रहरी सोमनाथ चटर्जी। भारत की संसद की पहचान लोकतंत्र के मंदिर के रूप में है। वो स्थान जहां देश के कोने कोने से आए जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता की आवाज मुखर होती है। संसद में आम लोगों की आस्था इस संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। उस आस्था का आधार बनती है संसद की निष्पक्षता। भारतीय संविधान के सच्चे प्रहरी बने वे थे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। 25 जुलाई 1929 असम के तेजपुर में जन्मे सोमनाथ चटर्जी को देशभक्ति और कानून की बारीकियां विरासत में मिली थीं। उनके पिता निर्मल चंद्र चटर्जी देश के एक प्रख्यात वकील, हिंदू महासभा के प्रमुख और सांसद थे। घर में कानूनी बहसों और जनसेवा के माहौल ने युवा सोमनाथ के विचारों को गढ़ा। कोलकाता से शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मिडिल टेम्पल से कानून की उच्च डिग्री हासिल की। भारत लौटकर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। उनकी धारदार बहस का हर कोई कायल था, लेकिन सोमनाथ जी की मंजिल सिर्फ अदालत के कटघरे तक सीमित नहीं थी। उन्हें राष्ट्र निर्माण के बड़े कैनवस पर अपनी छाप छोड़नी थी। 1971 में सोमनाथ चटर्जी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के टिकट पर पहली बार लोकसभा का रुख किया। Since it doesn't seem to be unparliamentary to you, I can only say there are several jokers in the house. Yes, maybe. Mr. Speaker, sir, I rise on a very solemn duty. I rise on a very solemn duty now to oppose this motion, and I hope the day of deliverance will come tomorrow for this country and the people of this country. Sir, the direction of this debate is such as if it is a motion which has been brought by the opposition. As if it is the opposition which has to justify why they are expressing lack of confidence in the Council of Ministers. इसके बाद वे 10 बार सांसद चुने गए, जो अपने आप में एक मिसाल है। संसद के पटल पर संवैधानिक पेचीदगियों पर उनकी पकड़ और जनहित के मुद्दों पर उनकी बुलंद आवाज ने उन्हें केवल वामपंथ का ही नहीं बल्कि समूचे विपक्ष और सत्ता पक्ष का पसंदीदा सांसद बना दिया। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि भारतीय संसदीय प्रणाली के एक ऐसे विद्वान थे जिनकी निष्ठा और अध्ययन का लोहा पूरा सदन मानता था। उन्हें 1996 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2004 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, जब सोमनाथ चटर्जी को सर्वसम्मति से 14वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब उनका कोई राजनीतिक दल नहीं है। अब उनकी केवल एक ही निष्ठा है,
भारत का संविधान और संसद की गरिमा। जुलाई 2008 भारतीय राजनीति एक भयंकर चक्रवात से गुजर रही थी। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उनकी अपनी पार्टी सीपीएम चाहती थी कि सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर पद से इस्तीफा दें और विश्वास मत के दौरान सरकार के खिलाफ वोट करें। लेकिन सोमनाथ चैटर्जी ने साफ कह दिया, स्पीकर का पद किसी पार्टी का नहीं होता, वो दलगत राजनीति से परे है। उन्होंने पार्टी व्हिप मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन जिस पार्टी को उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल दिए, उसने उन्हें निष्कासित कर दिया। लेकिन सोमनाथ चैटर्जी झुके नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि देश का संविधान किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर होता है। सोमनाथ चैटर्जी का अटूट विश्वास था कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने या बहुमत का नाम नहीं है। लोकतंत्र संवाद, असहमति के सम्मान और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से चलता है। 13 अगस्त 2018 को 89 वर्ष की आयु में सोमनाथ चैटर्जी ने इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। सोमनाथ चैटर्जी केवल एक स्पीकर नहीं थे, वे भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता का एक अमर प्रतीक थे। लाला हरदयाल के साथ जुड़े सोहनलाल ने बर्मा, मलेशिया, जापान और सिंगापुर में तैनात ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के बीच स्वतंत्रता की अलख जगाने की पहल की। वो भारतीय सैनिकों से कहते थे, जान ही देनी है तो अपने देश के लिए दो। जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है, जो हमारे देश के नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए प्राण क्यों देते हो? आंदोलन ने गति पकड़ ली। 1915 में सिंगापुर में भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। इसके बावजूद सोहनलाल पाठक डटे रहे। 1915 की ये क्रांति कुछ समय बाद थम गई, जिसके बाद सोहनलाल पाठक क्रांति की अलख जगाने बर्मा चले गए। अंग्रेजी तंत्र उनकी तलाश में था। सोहनलाल पाठक कई भाषाओं के जानकार और वेश बदलने में माहिर थे। एक मुखबिर की वजह से अगस्त 1915 में बर्मा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो जब तक जेल में रहे, जेल के नियमों के भी खिलाफ रहे। उनका तर्क था कि जब अंग्रेज नियमों को नहीं मानते तो उनके द्वारा बनाए गए नियमों का बंधन कैसा। बर्मा के गवर्नर जनरल ने जेल में उनसे कहा था, अगर तुम क्षमा मांग लो तो फांसी रद्द की जा सकती है, जिसका जवाब सोहनलाल ने निडरता के साथ दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी अंग्रेज हैं, क्षमा उन्हें मांगनी चाहिए। देश हमारा है, हम उसे आजाद कराना चाहते हैं, इसमें अपराध क्या है? नतीजा, अंग्रेजी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 10 फरवरी 1916 को अमर क्रांतिकारी सोहनलाल पाठक ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में
दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। भारत, जहां हर प्रदेश की अपनी संस्कृति है, हर लोक कला की अपनी पहचान है और हर विरासत की अपनी एक अनकही कहानी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल कल्चरल शो संस्कृति यात्रा में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं भारत की उस लोक कला से जो केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक परंपराओं की जीवंत स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है, कठपुतली कला। आज के इस विशेष प्रस्तुति में मिलिए सुप्रसिद्ध कठपुतली कलाकार पूरनचंद भट्ट से, जिनकी उंगलियों के इशारों पर कठपुतलियां केवल नृत्य नहीं करती बल्कि इतिहास के पन्नों को भी जीवंत कर देती हैं। कठपुतली कला लोक संगीत, प्रभावशाली संवाद और पारंपरिक प्रस्तुति के माध्यम से हमें राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। आज की प्रस्तुति आधारित है वीरता, स्वाभिमान और अदम्य साहस के प्रतीक अमर सिंह राठौड़ की ऐतिहासिक गाथा पर। तो आइए देखते हैं कठपुतली कला की इस अद्भुत परफॉर्मेंस की एक मनमोहक झलक। ये अमर सिंह राठौड़ गोना करके आए हैं। इन्हीं की खुशी में गांव के सभी कलाकार अपनी अपनी कला पेश करते हैं। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं बहरूपिया, भांड बहरूपिया। बहरूपिया, सब लोग को नमस्कार करो। ये नमस्कार, ये नमस्कार, ये नमस्कार। बहरूपिया, क्या तुम्हारा डांस होता है और क्या ये महफिल देखती है? ये कहते हैं नींबू वाला। नींबू वाला किस तरह से एक हाथ में नींबू है, किस तरह से ये कला अपनी दिखाता है। नींबू वाला, सबको नमस्कार करो। ये नमस्कार, ये नमस्कार, ये नमस्कार। क्या तुम्हारे नींबू का कमाल होता है और क्या ये महफिल देखती है?
अभी आपने देखी कठपुतली कला की वो शानदार प्रस्तुति जिसने ये महसूस कराया कि हमारी परंपराएं केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही जीवंत और प्रेरणादायक है। इसी विरासत की एक और रोचक जर्नी पर बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट की ओर। ये विशेष डॉक्यूमेंट्री वैदिक ज्योतिष को केवल आस्था के रूप में नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और डेटा बेस्ड नॉलेज सिस्टम के रूप में समझने का प्रयास करती है। इसमें महर्षि पराशर, महर्षि लगध और वराह मिहिर जैसे महान विद्वानों के योगदान के साथ वैदिक काल की खगोलीय खोजों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें बहुत कुछ बताया गया है, जैसे साइड्रल सिस्टम, अयानंश और ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति के आधार पर विकसित ये ज्ञान परंपरा आज के बिग डेटा